And we are recording. Thank you very much, everyone, for joining us for this HSN Alumni Speaker Series event on law careers. My name is Ahmed Jamal Vattu. I am your moderator for today's event. I am a graduate of Columbia University School of International Public Affairs, and I currently work at the World Bank in Washington, D.C. With me, as with every week, are my esteemed speakers. Our first speaker is Mohammad Ahmed Pansota from the Edson College batch of 2000. He is founding partner of Ahmed and Pansota Advocates and Legal Consultants. My second speaker is Usman Akram Sahi from the Edson College batch of 2002. Usman is partner at Cornelius Lane and Mufti, a law firm based in Pakistan. This event is sponsored by the Edson Mentorship Group, or AMG. What is AMG? It is a group of over 1,000 old boys connected mainly over the following social media platforms: WhatsApp, Facebook, and Discord. We organize weekly events to educate Edsonians about entrepreneurship, financial literacy, and potential career paths. To participate in any of these initiatives, you can email me at ajw2220@columbia.edu. Now, an outline for today's event. First up, we'll have a discussion with the speakers. This will be followed by a brief Q&A session. And lastly, if we have any time remaining, we can do some networking. Always great to network with fellow HSonians. So now I'll just stop sharing my screen and move on to my first question for both speakers. पहला सवाल आप दोनों से ये है कि why did you want to become a lawyer? क्या ये law का शौक 8 days से था आप दोनों को? And or maybe did you have law as your O-level, A-level subject? पहले मैं पूछना चाहूँगा पंसोटा साहब से. Ajit, thank you very much. First of all, to give me this opportunity to speak at a forum which is directly or indirectly connected to HSN. So I am very, very overwhelmed with this opportunity. अच्छा जी, जहां तक ताल्लुक है वकालत को शुरू करने का, I'll be very honest. My father was a civil servant and he's a retired civil servant. So he always had this innate sort of belief that I should not be in civil services, and apart from that, आपने जहां जाना है जाओ. And at the same time, he was also a very non-interfering father, and he always said कि जी जो आपका अपना profession choose करना है करो. मुझे बोलने का बहुत शौक था, which I could never display at HSN, and I was never into debates or anything. The only area that I used to participate in was sports, and that was the only known segment of HSN. ना पढ़ाई ना कुछ, so उधर मौका तो नहीं मिला. But I always wanted कि मैंने कोई ऐसा profession choose करना है जिसमें जाकर I can display my speaking skills. So class 6th and 7th onwards, I had decided that inshallah I will come into this profession. And then one of the main reasons for coming into this profession was my mother really wanted me to be a barrister, and she wanted me to be a barrister because she had seen Chaudhry Etazaz Saab, jo ki mere aaj bhi my all-time favorite, and I recently got an opportunity to do a case with him as well. What a gentleman he is. So yes, मैं वो फिल्मी dialogues तो नहीं है कि जी हमेशा से सोचा हुआ था या कुछ ऐसा. It was just that but I was very focused since 6th onwards that I will become a lawyer inshallah one day. Great जी. अहमद, आप थोड़ा explain ये भी कर सकते हैं आपकी educational journey HSN के बाद आपने कहाँ से अपना bachelor's किया and bar and so on. देखिए जी, HSN का ये था कि when I was at HSN, I did my O-levels, and after my O-levels, I'll be very, very honest, grades जिस किस्म के थे, the only way to survive at HSN was कि मैं intermediate करता, तो मैंने intermediate कर लिया, because हमारे लिए पढ़ाई से ज़्यादा important HSN था. So हमारे लिए अगर HSN 25 साल होता तो हम HSN में 25 साल रहते. It was such a beautiful place. So yes, I did my intermediate from HSN. And after that, I remember there used to be a degree called Diploma in Law, ये जो अब externals offer कर रहे हैं. So I was very lucky. I was late, but I was lucky कि एक शरीफ ट्रस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम है जो कि नवाज शरीफ साहब की यूनिवर्सिटी इधर है उस पे था. So I started my first year there, and then I shifted to UCL, which is University College Lahore external program. After that, I applied for my bar and did my bar. Worked in England for about 6 months. Did my first 6 of pupillage, and then I was called back because my father always had this idea कि इसने वहाँ कोई शादी वादी ना कर लियो. So then I had to come back. And I came back to Pakistan, and ever since that I started practicing. Initially, I also went to CLM, where mashallah Usman is a partner at the moment, and I started working with Justice Ijazul Hassan. At that time he was a partner at CLM, so I worked there for a while, and then I decided to go independent. So I started off this law firm with another friend. He's also from HSN, Ahmed Pervez.
So since 2007 onwards, we are running this law firm. It's called Ahmed and Pansota Advocates and Legal Consultants. So yes, it's a very brief career. Chale, thank you so much for that, Ahmed. I'll now move on to Usman for the same question कि आपको शौक कब से हुआ law का और आप भी थोड़ा अपनी educational journey का हमें बताएं, please. So I think my inclination towards law was incidental rather than something that I really wanted. I was always very good at math and even with maths related physics and so on. But math was like a passion in the sense that I never considered it study. वो क्लास में भी हमेशा आराम से हो जाती थी, एग्जाम्स भी बड़े आराम से गुजर जाते थे. But as we got to our A levels, I was never able to. Although, and I'll be very honest, हमारे time पे there was no real career or career counseling as such. मतलब schools में या even otherwise, there was no internet availability in the sense कि आप जाओ और जाके ढूंढो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता. So I always struggled with the idea of what I could do with math. Would I be a teacher, for example? Is it just academic, जो math है, or how does it get applied in a particular field? And I struggled with that idea, so I was always unsure. मैंने जब यूनिवर्सिटीज के लिए भी फाइनली एचएन से अप्लाई किया तो इट वाज ऑलवेज विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ कन्विक्शन कि मैंने क्या पाथ फॉलो करना है. आई वाज लकी टू गेट इनटू वन ऑफ द बिग कॉलेजेस एंड अनलकी at that time I thought not to get my visa in time. So एक साल का एक gap period आ गया where my father said, you've been in the boarding school for the last 5 years, 7 years. Stay with us for a year, you can go next year. So during that year, a couple of other circumstances happened and I started thinking कि यार ये तो उधर अमेरिका अब नहीं जाया जाएगा. And then just randomly someone suggested कि यार law क्यों नहीं try करते. And by that time, so this is past my A levels as well. I had never studied law. I had never thought about law. In fact, अभी मुझे एकदम से ख्याल आया, the only interaction with anything related to law was To Kill a Mockingbird, which we had read in O levels. जिसमें Atticus Finch हमारा बड़ा एक famous character बन चुका हुआ था कि जी Atticus बड़ी चीज थी. So I thought, हाँ, why not? Let's give it a try. So this was my first sort of inclination towards law कि चलो देख लेते हैं. And I bought a couple of books, पढ़ना शुरू किया जी contract law क्या होता है. And it just sort of started to click. And I applied to England. Even तब भी my interest levels and my knowledge as such of law or law schools was such कि admission हुआ 3-4 colleges में. I remember King's में भी हुआ, which is one of the biggest names in England colleges. But I decided to choose Warwick because everyone said the campus is huge like HSN. So I thought, okay, acha, the city universities won't suit me. I have to go for a campus college. And I went to Warwick. I did my LLB from there. And like Pansota Saab, I also did my bar immediately afterwards and came back and joined CLM. Ahmed Saab was already there. He was my senior at that point. I also started with Justice Ijaz Saab. And it's been about 14 years since that time. And here we are now. So it's again a brief career, but it's a very fruitful career. And as we've shifted towards it, at least I've over time made peace with the fact that ठीक ही हो गया coming towards this side, because it's a very forgiving and it's a very rewarding career if you put in the hard work. Thank you so much both for your answers to my question. अब अगला सवाल है मेरा again for Ahmed कि what is day-to-day work like as a partner and how did this schedule change over the years? जैसे जब आपने शुरू किया आगाज किया अपने law career का, तो what was day-to-day work like then and how would you compare it to what you are doing right now as a partner? एक्चुअली जी वकालत में भी जो ये ट्रांजिशन है ये एक्चुअली मजदूरी से एक चीफ एग्जीक्यूटिव की ट्रांजिशन होती है, लेकिन इस मजदूरी में चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होके भी मजदूरी करता रहता है, बस इतना फर्क है. सो एज सच अपेरेंटली उस तरह का वो खास फर्क नहीं, एक्सेप्ट द फैक्ट कि पीपल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू मोर, पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर केसेस एंड दैट टू इफ यू नो आर वर्थ इट, एंड देन पीपल स्टार्ट डिस्कसिंग यू एज अ सीनियर. बस उसके अलावा बाकी कंसिस्टेंट मेहनत का काम है. When I joined this profession, I'll be very honest, मेरा एक बड़ा व्यू ये था कि यार वकालत जो है ना, हम देहात के रहने वाले हैं और बड़ा मजा आएगा, कोई अपनी पीछे से बैकिंग भी होगी, तो ये बदमाशी वाला काम ठीक है, जब कोई मसला हुआ अदालत में चले गए, काला कोट पहना. बट दैट सॉर्ट ऑफ चेंज्ड द डे आई जॉइंड इजाजुल हसन साहब, बिकॉज फॉर सम ऑड रीजन आई डिडंट नो कि इजाज साहब जो हैं वो एक एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग कॉर्पोरेट आदमी है. सो आई वेंट टू सीएलएम द वेरी फर्स्ट डे एंड आई रिमेंबर दे सेड you have reached the office at 8:30, you should have been here by 8:15. So I thought he's actually
joking or something. So from next day onwards, I was on time. So when I was on time, then I realized कि उस दिन से आज के दिन तक, वो कहते हैं ना, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, कि छुट्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और अगर है भी तो वही जो आप वेकेशन पर चले जाते हैं या आ जाते हैं. सो यस, जो एक ट्रांजिशन है, जो एक चेंज है, वो ये है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आप काम ज्यादा करते हैं. बट एक चीज यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा, जो हमारी मेजोरिटी ऑफ द लॉ फर्म्स इन पाकिस्तान जो है ना, वो लैक करती हैं, एक्सेप्ट अ फ्यू, जिस तरह CLM, हसन एंड हसन, बिकॉज दे हैव गॉट कॉर्पोरेट कल्चर्स. वो ये है कि तमाम तमाम अपने टाइम में व्हाट वी डू इज कि हम कोशिश ये करते रहते हैं कि, जस्ट अ मिनट जी, आई थिंक, सॉरी, हाँ जी, हम अपने तमाम इस दौरानिए में कोशिश ये करते रहते हैं कि हम खुद काम करें, एंड वी डोंट डेलीगेट इट. जब डेलीगेट आप नहीं करते तो आप एज अ फर्म डेवलप नहीं कर पाते, एंड व्हेन यू डोंट डेवलप एज अ फर्म, तो फिर उसका नुकसान ये होता है कि इवेंचुअली आपकी फर्म जो है उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता, यू जस्ट इंडिविजुअल स्टिक टुगेदर. सो एक चीज जो मैं समझता हूं पाकिस्तान में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो रही है, दैट इज फर्म कल्चर. और फर्म कल्चर जब तक डेवलप नहीं होगा, सीनियर्स जो है वो सीनियर नहीं होंगे, वो अपना एक्यूमन नीचे ट्रांसफर नहीं करेंगे, नए लड़के तैयार नहीं होंगे. बिकॉज अगर आप पाकिस्तान का मुशाहिदा करें, द लीगल प्रोफेशन, यू विल सी नेम्स बट यू वोंट सी लॉ फर्म्स. लॉ फर्म्स एक दो हैं, जिस तरह CLM है, हसन एंड हसन है, हैदर बॉटा एंड मेनी अदर्स. बट जो मशहूर लॉ फर्म्स हैं वो इसलिए हैं क्योंकि वहां पर लोगों ने लॉ फर्म कल्चर लाया, बट बाकी इट वाज प्रेडोमिनेंटली अ वन मैन शो. सो आई थिंक कि जो वन मैन शो से ट्रांजिशन है टू अ लॉ फर्म, ये वो चीज है जो पाकिस्तान में आ रही है. और जब ये आती है तो आई थिंक यू फील एट ईज, बिकॉज देन यू आर प्रीटी मच sort of transferring that to all your juniors, youngsters. उनको मौका मिलता है. यहाँ पर लोग थोड़े से इस मामले में हल्के से, I would say, सेल्फिश हैं कि फाइल्स नहीं देंगे, अपना काम नहीं देंगे. वो चीजें हमें CLM में, we were very lucky, and I'm sure उस्मान ने भी वो चीज देखी होगी कि बड़ी से बड़ी फाइल पहले दिन टेबल पर होती थी, जाएं पेश होएं, just go argue your case. So this is that responsibility that sort of changes with time. But yes, of course, हर रोज responsibility बढ़ती है. So it's a daunting task. A very enlightening answer, Ahmed Saab. Thank you for that. Usman, what is day-to-day work like for you? Do you see any parallels with what Ahmed just explained right now? Okay, you know how work sort of changes and delegation of authority and so on. आप थोड़ा इस पे shed light कर सकते हैं? Yeah, bilkul. I'm in pretty much as much agreement as two lawyers can be on a subject. ऐसे ही है. You know, I think लॉ का एक फायदा भी है और एक ये नुकसान भी है, that you can, if you want, decide how much work you want to do. So that can work as a positive and as a negative as well. But when I joined the profession, again, our family had no lawyers. I didn't know anybody closely who was a lawyer. So हम जाकर मिलते थे, अबू ने एक दो कोई पुराने जानने वाले उनसे मुलाकात करवाई, just to get a feel. And then everyone used to say this one sentence, बस यार 5-6 साल का रगड़ा है, उसके बाद everything is comfortable. That's the biggest lie in the world. 5-6 साल का रगड़ा नहीं है, 5-6 साल का रगड़ा है, उसके बाद फिर 10 साल और रगड़ा है, और उसके 10 साल और रगड़ा है. I mean, I started with the Specialization साहब, only had a couple of years with him, and then he was elevated as a judge of the High Court. But I worked with with a senior partner, CLM Munawar Salam साहब, for the longest time, who, when I joined, everyone said, oh yaar, इससे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता, बहुत hard working है, ये है वो है. And we used to hear these things about him. It's pretty much still the same. I mean, he's still one of the first people in office most of the times. But generally speaking as well, other than that, weekends spent working, and even otherwise office hours be lambe rakhna. So while you try to find that life and work balance, but it's a lot of hard work. As you get older, or as you progress through a firm, or you open up your own firm like Pansora Saab did, I think the benefit that you have is like thoda sa, once you start developing a team, which is very important, as he rightly pointed out, you can sort of entrust people to work with you, and you can at least get some of the basic legwork done जो आप पहले zero से करते थे. So that's pretty much the only change. उससे लेकिन होता क्या है, हमारा जिस तरह का कल्चर है, पहले ये था कि पूरा दिन बैठ के एक काम किया है, अब आपके पास 2-7 लोग हैं who can help you out, तो आप 3 काम पकड़ लेते हैं, 2 आप उनको देते हैं, तीसरा आप फिर खुद भी कर रहे होते हैं. So in that sense, the work still carries on the same way. But yeah, I mean, that's how it is pretty much. And this profession demands time and work. उसके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता. You can't think about, becoming an owner of a firm in the sense that you won't have to work anymore and you'll just
reap the benefits. That doesn't happen. You have to work, and that's the only way to progress. Definitely this profession, it entails a lot of hard work, जैसे आप दोनों ने कहा. तो आपसे मैं सवाल करता हूँ उस्मान अगला कि from the perspective of an Estonian or any high school student who just graduated, also did their bachelor's in law, उसके बाद आपको opportunity मिलती है to specialize in a certain field, जैसे civil, constitutional, criminal law and so on. तो आप क्या advice देंगे कि जो आपकी specialization है वो किस तरह choose करनी चाहिए? अच्छा, so it's very interesting that normally आप किसी से बात भी करते हैं और आप कहते हैं जी आई एम अ लॉयर, तो उनका पहला आगे से सवाल यही होता है कि अच्छा कौन से लॉयर हो. So but there's no actual concept as such of a civil lawyer or criminal lawyer. ये कहाँ से चीजें आती हैं? It's just कि वो बंदा ज्यादा केसेस कौन से करता है, वो उसकी ज्यादा प्रैक्टिस किस साइड पे है, कौन सी साइड पे उसने ज्यादा कोई ऐसी जजमेंट्स ली हैं जिससे उसका नाम थोड़ा रोशन हुआ है. एंड देन पीपल स्टार्ट सेइंग, ओ हाँ ये क्रिमिनल का बड़ा माहिर है, ये इसका बड़ा माहिर है. हमारे यहाँ पर, एंड ऑल्दो इंटरनेशनली इट्स एब्सोल्युटली लाइक यू सेड, you have experts who are experts in, let's say, intellectual property, and you see even in the biggest law firms they have a partner of intellectual property. That lawyer does nothing else than they just concentrate on intellectual property, Islamic finance, criminal, कोई भी जो है ये, so there are very small sort of niches जिसके अंदर सबने specialize किया हुआ है. पाकिस्तान में I mean as far as I think अभी तक हमारी ये लॉ की मार्केट एज सच इतना डेवलप नहीं हुई. देयर इज जस्ट दिस बेसिक डिवाइड, क्रिमिनल एंड सिविल. ये मोस्टली हो रहा है कि जो लोग क्रिमिनल की तरफ ज्यादा चले जाते हैं, दे स्टिक टू क्रिमिनल लॉ, एंड दोज हु डोंट डू क्रिमिनल, दे आर ऑल सिविल इन दैट सेंस. सिविल में सब कुछ ही आ जाता है, चाहे वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल काम है, फैमिली मैटर्स हैं, स्टैंडर्ड सिविल डिस्प्यूट्स हैं, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स हैं, एंड सो ऑन. सो देयर इज अ बेसिक distinction between civil and criminal law, but उससे ज्यादा आगे स्पेशलाइजेशंस बहुत कम आपको सुनने में मिलती हैं. As far as transactional work is concerned, उसमें बिल्कुल कुछ firms हैं जिन्होंने अपनी teams बनाई हुई हैं who concentrate on financing and on, let's say, power sector and on the health sector, on infrastructure. So उस तरह से कुछ थोड़ी बहुत divisions हैं, but generally as a whole there are no specializations as such. My advice to anybody is, I mean, and I think Pansota Saab is one to really learn from on this aspect as well. Criminal law में आपका ज़्यादातर exposure is court work, and it involves a lot of trial work in the lower courts and then in the high courts as well. So if you really love court work, that's one area that you can really look at. At the same time, आपके ये civil, corporate, constitutional side पे भी you have an equal opportunity in the high courts as well. Different ball games, but it really depends on your temperament as well. Niche, there's a bigger struggle temperamentally. Niche, aapki interaction with other lawyers, with the judiciary, and the way you present your case, it's not how you see and how you've come to think of it on TV, for example, कि किस तरह से आपके cases चलते हैं. So it's a struggle mentally. You have to be really focused, and you have to be really with conviction follow what you think is the right way to handle cases, because itna aasan nahi hota. I mean, but I would always recommend to any lawyer who wants to join this profession that they should have at least some part of them should be in litigation, whether it's criminal or on the constitutional or civil side, but there has to be some litigation. It can't just be office work, otherwise वो मुझे लगता है कि at least वो fun नहीं रहता उसके अंदर. Right. Thank you so much for that answer, Usman. Ahmed, same question to you about specializations. Do you share the same thoughts? And you, on a personal level, which cases do you mainly deal with? Specialization का जी ये है कि I recently was at a moot competition and I didn't realize कि I had sent them my firm profile. So when they started introducing me, said Mohammed Ahmed Pansota specializes in banking, civil, constitutional, labor, फलाना, वो हमने CLM के टाइम की एक बना के रखी हुई थी clients को घेरने छेड़ने के लिए. So I think it took them a minute or so before I realized कि यार मैं कितना कुछ करता हूँ और मेरा ख्याल में इतना कुछ नहीं करता. So fact of the matter is, as just Usman said,
that it is a stroke of luck. Let's say if I hail from a criminal area and I start getting criminal cases, I will be an expert in criminal law. So a client determines your area of specialization. So let's say for that matter, if my father is a retired banker, so as to say, I will start getting banking cases and then I'll start excelling in that. But yes, there is one distinction you need to make. When you are joining this profession, we always ask this question to all our juniors who are willing to work with our law firm, that what do you want to do? Is it like the corporate work or litigation? This is one distinction that you can draw at the very outset by, just deciding it at that point in time. Otherwise, you will always remain a mixed bag. So most of the people that join our law firm are interested in litigation, as are we, because we are also a firm which specializes in litigation. And then there is pretty much anything and everything that we are doing. But yes, with the passage of time, your area starts getting narrowed down. I'll just give you my example. Procurement was one subject that I had never ever thought of that I will ever specialize in, or I will start practicing in. There was a time somebody hired me for a very small procurement case, and there was a gentleman who was standing in court and said, "Ki ji, मुंडा बड़ा अच्छा बोलता है भाई, मैं वकील करना है." So he came out and he said कि मैंने तो उसकी बातें सुनी, तो मुझे तो वो लगा कि बंदा कोई ऐसे ही होगा, लेकिन he was basically owner of a very big company. So एक procurement का एक और केस किया, करते out of the 76 reported judgments that I have at the moment, about 16 of them are related to procurement. So that's when I realized कि यार procurement वाला अच्छा काम है. अभी off late मुझे ये PSL वाला केस करने का मौका मिला. So cases पे determine करते हैं, फिर आपको मौका मिलता है, और आप I'm actually thinking of writing a book on procurement. So ये वकालत पाकिस्तान में it's a very different sort of a profession कि मैं खुद सोच के आऊं कि जी मैंने child protection laws पर काम करना है, लेकिन it ends up कि मैं company law का expert बन गया. I'll give you one example. Dr. Khalid Ranja, one of the greatest lawyers this country has at the moment, federal law minister and whatnot. He is a PhD in company law from UCL. But he started practicing as a criminal lawyer with a retired sessions judge and turned out to be one of the greatest criminal lawyers. So वो PhD कंपनी लॉ में, बिकॉज मैं जब उनको मिलने गया तो मैं उनको कंपनी लॉ का बताना शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा बेटे हैंग ऑन, आई एम अ PhD इन कंपनी लॉ फ्रॉम UCL. मैं कहा आई एम सॉरी सर. सो वही वाली बात है, इट जस्ट हैपेंस कि आपके वालिद साहब के दोस्त के एरियाज में हैं, तो अगर वहां से केसेस आ रहे हैं, या आपके दोस्त जो है वो डाकू टाइप हैं कि पढ़े लिखे टाइप हैं, तो वहां से केसेस आ रहे हैं, या आपके सर्कल में मूव करते हो. आई मीन लाइक आई नो अ लॉयर, उसके ज्यादातर दोस्त इश्तिहारी हैं. सो ही इज टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी गुड क्रिमिनल लॉयर, क्योंकि वो कहता है जी मेरे दोस्तों के केस ही नहीं खत्म होते. सो दैट्स आई थिंक वन थिंग दैट पीपल आर फेसिंग. बट अब स्पेशलाइजेशन की तरफ लोग जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता. यू गॉट लॉ फर्म्स सच एज CLM, हसन एंड हसन, इरफान एंड इरफान. यू कैन टेल कि किस चीज में स्पेशलाइज करती हैं. वैसे CLM का तो आज तक हमें नहीं पता लगा, बिकॉज दे आर प्रीटी मच डूइंग एवरीथिंग अंडर द सन, एंड एक्सपर्ट्स बाकी कुछ लॉ फर्म्स में यू कैन टेल कि जी क्या करती हैं. सो स्टूडेंट्स कैन सॉर्ट ऑफ पिक अप एंड चूज. इस टाइम पर थोड़ा सा हो गया है. Right. Thank you so much for both. Very interesting takes. Usman, आपके लिए अगला सवाल है about the process of being a judge, High Court, then eventually Supreme Court, because mostly जो students हैं उनके eventual goal भी ये होता है कि हमने judge बनना है, you want to make these important decisions for the country. तो आपकी क्या advice है इस पे, exact process क्या है, and what are the incentives at the end of the day for being a judge? Right. So एक तो of course it seems to theoretically make sense that a lawyer should become a judge, and you think कि आपका जो career है, that's your career path. मैं lawyer था, मैं senior lawyer हुआ और फिर मैं judge बन गया. But it doesn't that's not actually in that sense a promotion. I mean judiciary is an entirely different field अगर आप उसको strictly देखें. एक आपका law का profession और एक आपका judiciary का profession है. जुडिशरी आपकी लो जुडिशरी से भी आती है, आपके सिर्फ जजेस प्रमोट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस बनते हैं, और वहां से भी हाई कोर्ट के जजेस आते हैं. एज फार एज द इनटेक ऑफ लॉयर्स इनटू द हाई कोर्ट इज कंसर्न्ड, दैट एब्सोल्युटली हैपेंस, एंड इट्स जनरली जब भी अभी हम रिसेंट टाइम्स में भी देखते हैं, तो वो लास्ट 10-15 years वेल, मोस्टली द लॉयर्स हु बिकम जजेस, यू सीन देम इन कोर्ट्स, आपको नजर आते हैं, इंटरेक्शन हो रही होती है. They're mostly people who do appear before various judges, and some of the top lawyers of the country do get the opportunity to become judges as well. The requirements for the high court judge, as far as your legal profession के angle से मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, because अगर आप if you've been in the judiciary or if you've been
holding a judicial office, उनकी अपने वो 10 years and 3 years as a district judge की requirements होती हैं. But if if I were to think about becoming a judge, the first requirement is that I should have had practice of at least 10 years of the High Court. That's the requirement. And the second one is 45 years minimum age. So once I'm over 45, I'm in that sense eligible to become a High Court judge, as long as I've also had the High Court license for 10 years. But it does not mean that now I can go and apply to become a High Court judge. There is no entitlement. There is no sort of job opportunity के अगले दिन अखबार में इश्तिहार आ जाएगा. It's basically जो हाई कोर्ट की अपनी एक कैपेसिटी है उसको उन्होंने मेंटेन करना होता है. एट टाइम्स काफ़ी पोजीशंस खाली भी रहती हैं. करंटली भी आई बिलीव थोड़ी बहुत सीट्स अभी के लिए भी खाली हैं. एंड देन एज द टाइम कम्स वो स्पेसेस फिल होती रहती हैं. कुछ रिटायर होते हैं, उनकी जगह रिप्लेस हो जाता है. एंड इट्स एसेंशियली द एट दैट टाइम द मेन अथॉरिटी फॉर द हाई कोर्ट is the Chief Justice of that High Court. So if it was the Lahore High Court, it would be the sitting Chief Justice of the High Court who would essentially nominate a particular lawyer, and if approved, then uski appointment ho jati hai as a High Court judge. So that's for the High Court. A Supreme Court ka, it's a slightly different way to do it. For that, you need to be a judge of the High Court for 5 years. And I think High Court ka 15 years ka experience hota hai. कि one of the two. If you've been although I don't think directly lawyers से judges appoint होते हैं यहाँ पर. एक दो हुए हैं technically, but not really. They were judges at some point. But mostly it's High Court judges who get elevated and they become Supreme Court judges as well. And उसमें फिर there's a Judicial Commission of Pakistan, which is headed by the Chief Justice of Pakistan. Along with 4 senior members of the judiciary, the Attorney General, the Federal Law Minister, a member of the Pakistan Bar Council, a retired judge. वो इस तरह का एक पूरा panel है. They go through the nominees and they decide कि हाँ जी, we nominate these 3 people, these 3 judges of the High Court to become judges of the Supreme Court. Those names then go to the Judicial Commission, and they essentially, unless they find serious reason not to agree, generally they do agree to the parliamentary committee. The Judicial Commission भेजती है उसको. So वो normally agree कर लेते हैं. The president signs off on that as well. So these are the main processes. So it's not a matter of right कि किसी lawyer ने बनना ही है judge, but of course it's, you think of it as the right way to go about your profession, in the sense that you think as a judge I'll be able to contribute more, but you can do equally as much, if not more, as a lawyer as well, through various initiatives, whether it's court work or it's through working towards policy directives in different fields in Pakistan. Okay, thank you so much for that very detailed answer, Usman. I think काफी आपने explain कर लिया है for prospective judges. तो अहमद, आपके लिए सवाल था कि आजकल it is very important for lawyers to to get cases, they need to be recognized, they need to have national attention. तो ये ज़्यादातर ट्रेडिशनल मीडिया और आजकल सोशल मीडिया से भी ये चीज़ काफ़ी यूज़ हो रही है बाय लॉयर्स. तो आपकी क्या एडवाइस है इस पे कि हाउ शुड prospective lawyers gain traction online and in courts? आप इस पे थोड़ा बता सकते हैं? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि भी पहले बात हो रही थी वकालत में, उस्मान ने बड़ी अच्छी बात की कि 5 साल, फिर 10 साल, फिर मजीद 10 साल. मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात एक वकील साहब ने की थी कि वकील पहले 10 साल मेहनत करता है और फिर मैंने पूछा, उसने कहा जी फिर अगले 10 साल जो है ना वो भी मेहनत ही करता है. ठीक है. तो मैंने फिर पूछा है कि जी ये जो अर्निंग है, उसने कहा जी पहले 10 साल वो काम करता है, दबा के उसके बाद उसको आदत हो जाती है और पैसे शैसे कोई नहीं है. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि एक वकील साहब ने अपनी सबसे पहले मेंटली जो है वो तैयारी करनी है कि जी उन्होंने किस चीज के लिए काम करना है, अपने आप को किस लाइन पे लाना है, काम शाम करना है कि नहीं करना. फिर वो अगली बात आती है क्लाइंट्स इंटरेक्शन. आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली, वी स्टार्टेड ऑफ वेरी अर्ली. सो द फर्स्ट मंथ ऑफ माय लॉ फर्म, मुझे याद है कि मेरे पास आई थिंक 6 या 7 हजार रुपए आए थे, which wasn't much. I think it was equal to what I was getting at CLM, but that was it. अब मेरी 6-7 साल की वकालत थी. सो कहने का मकसद ये है, when you perform in 1 or 2 cases, जब लोग आपको देखते हैं, ये मिसनोमर है, no doubt you've got ये इंग्लैंड में भी कॉन्सेप्ट है कि एम्बुलेंस चेजर्स एंड ऑल ऑफ दीज लॉयर्स दैट यू हैव, बट एट द एंड ऑफ द डे वो आपको 1 दफा केस देंगे, 2 दफा देंगे. Nobody will waste his case just because ये मेरे दोस्त का बेटा है, मेरे भाई का कजन है, ये है, वो है, फलाना है, all of that. Nobody will do that.
इवेंचुअली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू योर परफॉर्मेंस. ये जितनी बड़ी लॉ फर्म्स हैं, इनमें भी अगर आप पार्टनर्स को देखें, तो दे परफॉर्म एंड दैट दे गेट केसेस. नाउ आई विल कम टू that part of your question about traction online and national presence. देखें, आजकल के दौर में एक एडिशनल बेनिफिट्स हैं, जिस तरह टीवी है, सोशल मीडिया है, यू गॉट योर यूट्यूब चैनल्स. आई कम अक्रॉस सच अमेजिंग लॉयर्स. लेट्स से कि मैंने कुछ दिन पहले लीगल रिसर्च करनी थी ऑन लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस. देयर वाज अ लॉयर फ्रॉम गुजरावाला, उसने इतनी जबरदस्त उस पर यूट्यूब की वीडियो बनाई हुई थी, ट्रस्ट में मेरे पूरी केस की तैयारी हो गई. सो दैट वाज वन वे ऑफ रिकग्निशन. सो इफ आई हैव टू रिकमेंड समबडी इन गुजरावाला, he will be the person. So all of these are ways of getting yourself registered. ये of course हमारे modern day की इस वक्त चीजें हैं. बट एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर किसी का ये ख्याल है ना कि कोई बंदा टीवी पे आता है और उसको केसेस मिलेंगे, मैं आपके सामने प्राइम एग्जांपल बैठी हूँ, मुझे अभी तक टीवी की वजह से शायद 1 या 2 केसेस मिले, अगर वो भी लोगों ने फीस नहीं दी थी कि बस ये आपको हमने टीवी पे देखा है. बाकी आपकी अपनी रेपुटेशन इन लॉयर्स, रेपुटेशन ऑफ कोर्स इन जजेस आपके बारे में बहुत बात करते हैं कि यार ये वकील मेरे पास पेश हुआ था, बड़ा अच्छा लड़का है. जजेस से तो लोग मिलते हैं, और इन सब जजेस के बड़े बड़े बिजनेसमैन दोस्त भी होते हैं, बिकॉज दे हैव ऑल बीन सेलिब्रेटेड लॉयर्स इन देयर टाइम. सो उनसे लोग पूछते हैं कि यार कौन सा वकील अच्छा, देन दे सजेस्ट कि यार फलाना अच्छा, उसको मैंने कोर्ट में देखा है, या वो मेरी कोर्ट में पेश हुआ था. दिस इज हाउ योर रेपुटेशन ट्रेवल्स. एक बुरा केस, अच्छा केस हारना इज नॉट अ प्रॉब्लम. आई थिंक CLM, हसन एंड हसन, हम सब ने बहुत केसेस हारे होंगे. इट इज द बैड परफॉर्मेंस इन दैट केस जो आपके लिए एक वबाले जान बन जाती है कि जी सुबह छोटा सा केस में पेश हुए, तैयारी कोई नहीं थी जी. दिस विल ट्रेवल. ये ट्रेवल नहीं करेगा कि बहुत अच्छा आर्ग्यू किया बट हार गए तो कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं. सो यस, ये अभी भी थोड़ा सा इस प्रोफेशन, इस मामले में कन्वेंशनल है. ये यूट्यूब से इधर उधर से केसेस मिल जाते हैं, बट वो सारे केसेस वही होते हैं कि मतलब किसी ने किसी को कुछ दे दिया, फलाना कर दिया, ये कर दिया. And recently, I would take this opportunity to mention that we have formed a forum which is called Vakil Online. It is an online forum, and the Justice Project of Pakistan and Vakil Online, they've collaborated. और इसका concept ये है कि हम वकीलों को और जो हमारे साथ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं उनको कनेक्ट करें, ऑफ कोर्स कीपिंग इन व्यू द लोकल लॉज, बिकॉज अंडर पाकिस्तानी लॉ यू कांट एडवर्टाइज योरसेल्फ एज अ लॉयर. ये ओल्ड कॉलोनियल लॉज चल रहे हैं, बट हम कोशिश कर रहे हैं इनको कनेक्ट करें. हमने अपनी एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की ऑन आईफोन एंड एंड्रॉयड, ऑल ऑफ दिस, सो पीपल कैन एक्चुअली रजिस्टर दैट, आंसर कर सकते हैं क्वेश्चंस. अब उसका फायदा ये हो रहा है कि उस पर कोई सवाल डालता है, लेट्स से कि मैंने खुला करवानी, उसका प्रोसेस क्या है, तो नीचे एक वकील साहब कमेंट करते हैं कि जी खुला का प्रोसेस ये है. तो जिस आदमी ने कमेंट किया हुआ है वो उनको पर्सनल मैसेज करेगा, कहेगा जी मैं आपको हायर करना चाहता हूं. सो इट्स लाइक अ फूड पैंडा ऑफ लॉयर्स, और यू कैन कॉल इट, इट्स लाइक यू नो कनेक्टिंग लॉयर्स टू देयर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स. तो ये चीजें ऐसी आ रही हैं, और ये सब टेक्नोलॉजी की बाय प्रोडक्ट्स हैं. हमारे टाइम में जब हमने वकालत शुरू की, उसमें इस तरह नहीं थी. ये फेसबुक ऑकट शॉकट ही होता था, वो भी आपको पता है कि और कामों के लिए इस्तेमाल ज्यादा होता था, केसेस वहां से कहाँ मिलने होते थे. अब चीजें जो है, अब चीजें चेंज हो गई हैं. टेक्नोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बट यस टेक्नोलॉजी एक केस दिलवा देगी, 2 दिलवा देगी, परफॉर्मेंस पे बात आती है. डेफिनेटली जी. तो एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ एक एक्सटेंट तक ये चीजें हेल्प करती हैं. आफ्टर दैट आपकी परफॉर्मेंस जो है, इट शुड स्पीक फॉर इटसेल्फ. थैंक यू फॉर दैट. उस्मान, आपके लिए सवाल था कि व्हाट आर द टूल्स एंड रिसोर्सेज व्हिच मॉडर्न डे लॉयर्स कैन यूज. अब जैसे अहमद ने मेंशन किया, देयर आर मोर प्लेटफॉर्म्स कमिंग अप लाइक वकील ऑनलाइन एंड सो ऑन. तो आप क्या रेकमेंड करेंगे, क्या प्रोस्पेक्टिव लॉयर्स यूज कर सकते हैं टू गेट एज मेनी केसेस एज पॉसिबल एंड आल्सो परफॉर्म वेल ऑन दीस केसेस? अच्छा, सो आई मीन ये जो एक आई थिंक एज अ फर्म वी आर slightly more traditional in the sense that we don't advertise as much, but it's a personal choice for everybody. I am myself, I think, more old fashioned in that sense, but there's a huge benefit to be had out of technology and access to people through social media and through any of these platforms. It can be misused also. I mean, wherever there is benefit, there's always the opportunity to also misuse things. That's always there. Lekin I don't think there is any harm in advertising yourself, not exactly advertising yourself, but letting people know of the opportunities that they might have. So वो बिल्कुल करना चाहिए. जो भी एक नया lawyer आता है, what are the resources available to them? देखें जी, let's think of a very simple example. I mean, law के profession में there are thousands of things that you can do, but basic क्या concept है? Lawyer है, case करना है. मुझे जब मैंने start किया था तो मेरे senior ने बड़ा एक interesting बात की थी जो मैंने उस टाइम पे उनके साथ बहस की, और वो उस दिन से शायद आज तक मुझे
इसी बात पे कहते हैं कि जिस बात पे तुम्हारा दिमाग अटक जाता है ना, उसे हिलाना तुम्हें बड़ा मुश्किल है। लेकिन उन्होंने मुझे फर्स्ट डे ही बोला कि लॉ के प्रोफेशन का मजा ये है दैट फ्रॉम डे वन theoretically you are on the same level and on the same stage as a lawyer with 30 years of experience even. आप दोनों कोर्ट में मौजूद हो, आप दोनों एक एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो. If you have put in the work and the research, you have an equal opportunity of winning the case and presenting the case properly. There is no reason why that experienced lawyer should बीट यू जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस. जैसे स्पोर्ट्स है, उसमें स्पोर्ट्स में एक बंदा ज्यादा देर से खेल रहा है, उसको आदत है टू डू बेटर इन क्रंच टाइम, या उसका ही इज जस्ट ग्रोन बेटर. अभी आप दूसरा बच्चा इज जस्ट क्रॉनी 18-19 year old, बट इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट फॉर मी. एंड ऐसे नहीं, ये कैसे हो सकता है, उसका 30 साल का एक्सपीरियंस है, ही नो व्हाट बुक टू लुक एट. ही सेड सो जस्ट स्पेंड मोर टाइम. उसने घंटे में कर लेना, तुम 6 घंटे लगा दो, तुम 10 घंटे लगा दो. As long as you're motivated, and as long as you're willing to go that extra mile to get to your answer, you'll be in the same place as he is. There's no benefit of being a senior in that sense. Of course, aista aista you realize that that's at a basic level, and uske baad bada farak pad jata hai. But I mean, as far as resources are concerned, आपके पास कुछ online platforms available हैं in the smaller concept of resources where you can sort of learn. एक बड़ा आसान जो हमें जैसा अभी तो छोटा सा नहीं बताया है, now there's an avenue where कोई भी आपको सवाल आता है, you can just do a Google search and you can come up with a basic answer at least. So that's a small resource also to help new lawyers. But I would always say that's not the right way to do it. Go the old fashioned way. आपको कोई सवाल आया है, don't look for that shortcut कि मुझे जरा गूगल से कुछ पहले पता चल जाए. Try to find the answer, try to think about what law would apply, what principles would apply. Go to your office library, look for the relevant books, spend an hour, look for the relevant case law, read a case or two, instead of just finding the answer within 10 seconds, and as my senior used to say, just shutting your brain off कि यही होगा जवाब, Google ने कह दिया. But I mean, this is an example of resources and tools at a very basic level. Yep. Other than that, I think Panchoda would agree, if you want to really think about it in a more of a not a very strict sense of the word, hard work is your real resource and tool. यहाँ पे जितना आप time लगाएंगे, that's only going to reward you. And if you don't, it will show up sometime in court. You can speak as well. As we know a lot of people in our profession who are brilliant orators, who can speak so well कि हमारे भी मुंह गिर जाते हैं कि यार ये बंदा बोलता कितना अच्छा है. But 5 minutes you listen to them and you realize कि बस बोल ही रहा है और उसको कुछ पता नहीं है केस का. So I mean that's the main thing. I mean, as long as you put in the work, you'll get rewarded for that, and that's the best resource you can have. Thank you so much for that, Usman. Emma, do you have any parting advice for our attendees? बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ जो उस्मान कह रहे हैं, बिल्कुल I totally agree. There is of course no shortcut to hard work, but yes, हार्ड वर्क किस तरफ करना है ये भी एक बहुत बड़ी आर्ट है. देखिए, मेरे से जब कोई पूछता है ना वकालत के बारे में, मैं कहता हूँ जो एक वकील को डिफाइन करती है चीज, वो है उसकी इनिशियल एडवाइस. एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वकील के पास कोई बंदा आता है तो दे एक्सपेक्ट कि अभी आंसर दे, और हमारे वकील साहब उस वक्त आंसर दे भी देते हैं. यू शुड ऑलवेज रिसर्च. वो एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि डॉक्टर पढ़े बगैर और वकील पढ़े बगैर और डॉक्टर पढ़ के अगर आपको इलाज करते हैं तो अल्लाह ताला आपका हामी नासिर है. सो हार्ड वर्क जो है उसका ऑफ कोर्स देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, बट यस, as somebody who's advocating for technology for justice, and we are recently strongly advocating that, we just did a conference yesterday on that, technology should be included, technology should be used, but that does not mean you type on Google something and then you wait for the answer and you say bas ye subah mein court mein le jaunga. No, okay, I will take it the other way around. You Google something and you say ki what does article 19 say, or what's the case on that, aa jata hai, aap usko nikal lein. There is a concept called backtracking. Then you go and check कि यार ये बात ऐसे है कि नहीं है, and then you start questioning that judgment, then you start questioning that research. Eventually जो आपकी बैक ट्रैकिंग है वो हो जाएगी. ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो हमारे जैसे मतलब थोड़ा सा नालायक हैं, कि जो चाहते हैं कि डायरेक्ट आंसर पे आ जाएं, बट उसको बैक ट्रैक करें. देखिए, व्हाट इज गूगल? गूगल इज अहमद, उस्मान और जोड़ा ने जो चीज अपलोड कर दी वो गूगल है. So these are not the perfect answers, but yes,
These are good answers. They can take you can take them to a pond, but they'll have to drink water themselves. So उनको करना ये है कि फिर उस चीज को बैक ट्रैक करें, उसको इनिशियल रिसर्च करें. हमारी बेसिक्स थोड़ी सी डिफरेंट है, जिस तरह उस्मान ने भी कहा. आई स्टिल रिमेंबर कि व्हेन आई जॉइंड CLM, तो देयर वाज अ जेंटलमैन एट CLM हु स्टिल इज अ पार्टनर देयर, सलमान भट्ट साहब. ही सेड कि जरा डैमेजेस पे रिसर्च करके मुझे दें आप 1910 से. मैं शुरू हो गया, जो शुरू हुआ करता रहा 2 दिन लगा रहा. मैंने कहा सर उस पर कोई केस नहीं मिला. कहते हाँ यार उस पर केस है भी कोई नहीं, वो तो वैसे ही आपको चेक किया था. So you see, we've been brought up in this atmosphere, and हमने इस तरह रिसर्चेस की हुई हैं. So of course there is a difference हमारा, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इन सब चीजों को बहुत ओवरकम कर लिया है. बट मैं हमेशा कहता हूँ टेक्नोलॉजी को बाईपास मत करें, टेक्नोलॉजी जरूर यूज करें, बट एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि जवाब ठक करके सामने आ गए. और ठक करके जवाब उन लोगों के लिए ठीक है, लेट्स से सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनके लिए भी एक bench.pk एक ऐप बनाई गई जिसमें सारा केस लॉ है. So if somebody has about 40 years of experience, he or she can afford to look at these ready references, but not Usman, myself, or maybe any other lawyer. हालांकि हम 20-20, 21-21 साल के केसेस की वकालत करने के बाद समझते हैं कि हमारे साथ कई दफा वकील आता है, he just blows the hell out of us. ऐसे ऐसे बोलना शुरू करते हैं. So yes, this is an even playing field. This is like a sports. कि आप बेशक यहाँ पर बाबर आजम खड़ा हुआ है, बट एक नया बॉलर आएगा, वो इन स्विंगर करेगा, वो जाएगी आपकी विकेट. Why? Because he's more prepared on that particular day and time. हम जब सीनियर होते जाते हैं हमारे प्रोफेशन में, हम एक बड़ी ज्यादती करते हैं. We stop preparing our cases like we used to do 10 years ago. और ये हमारे बहुत सीनियर्स के साथ प्रॉब्लम्स है, और ये हमें स्पेसिफिकली रोका गया था बाय आर एल्मा मैटर्स, जिसमें इजाज साहब हैं, हामिद खान साहब हैं, कि तैयारी कभी नहीं रोकनी. आज भी अगर कोई कानून पढ़ना है तो पहली दफा समझना आप किताब खोल रहे हो, वरना आप उस बंदे का मुकाबला नहीं कर सकोगे जो फुल तैयारी के साथ आया. Thank you so much, Ji. To both our speakers, this is the end of our discussion session. I want everyone to please give them both a huge round of applause, virtual applause from my side. And जो अगला हमारा जो section है of this talk, it is a Q&A session with the audience. तो मैंने देखा है कि शफीक बख्श अली साहब के questions कुछ हैं, तो we'll go to those. वो पूछते हैं, Pansota साहब, how do you see the scope of being a maritime lawyer in Pakistan? Can a young law graduate go for LLM in international maritime law? मेरा ख्याल है मैरिटाइम के लिए बड़ा जरूरी है कि पानी भी हो. पानी तो वैसे एक्सटिंक्ट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, बट यस ऑफ कोर्स एनी इफ यू फिर इन कराची, आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल ऑप्शन. देखिए एनीथिंग जहां पर आपका, आई मीन इफ आई वर टू पुट इट इन अ वेरी डिसेंट वे, तो एनीथिंग दैट अम्यूजेस यू, एनीथिंग दैट हेल्प्स यू. बट हाँ, अगर इसको आपने क्रूड वे में कहना है, अब्बू के दोस्त जहाँ बैठे हुए हैं, चाचे के कजन्स वगैरह जहाँ बैठे हुए हैं, दोस्त यार जहाँ बैठे हुए हैं, अगर वो मेरी टाइम की मिनिस्ट्री में बैठे हैं, तो जाए उनको पकड़े, उन्हें कहे जी मुझे काम दे. होता ये कि आहिस्ता, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. I got one case on sexual harassment. That was a subject that I would have never practiced. मुझे पता भी नहीं था, लेकिन एक केस मिला और वो पहला ही बहुत अच्छा केस मिल गया मीशा शाफी का. नाउ पीपल एक्चुअली थिंक आई एम एन एक्सपर्ट ऑन दैट, या मैं एक अथॉरिटी हूँ. मुझे खुद अपनी रीडिंग को अपडेट रखना पड़ता है कि कई दफा फोन आता होता है, अस्सलाम वालेकुम जी, वी आर स्पीकिंग फ्रॉम BBC, तो जरा हमें बताएं. उनका ख्याल ये है कि सेक्सुअल हरासमेंट लॉज लिखे ही शायद इसने. सो इसलिए if you get that right case, if you get that right sort of thing, तो nothing like it. And maritime has of course with the future, जो आजकल इस वक्त सारी दुनिया में मामला चल रहे हैं, eventually इसका बिल्कुल स्कोप है, और पाकिस्तान में कराची में तो बहुत है. जी, thank you for that question, Shafiq, and thank you, Pansota Saab, for answering. If anyone else has a question, please turn your video camera on, go to reactions and use the raise hand feature. आप ये feature use करें, you can ask a question. जी, Hashim Gadi साहब, please go ahead. आप प्लीज अपना वीडियो कैमरा ऑन कर लें और अनम्यूट भी कर लें. थैंक यू. Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, yes you are. Please. Okay. First of all, I want to say thank you for this organizing this beautiful platform and giving us the opportunity. My question to the seniors is that when I actually have graduated in law last year. So my question would be that if I want to join a firm or any senior that is currently in our Lahore especially, what should we see in the senior or the firm to be part of it? Because actually I have joined some firms, 2 firms previously,
But the thing in the practice there is that for 6 months you look around, you don't get the work. And secondly, if there are quite limited works that they offer. So is it an appropriate way that we should start with a year or two in the room sitting and just researching? Or should it be like that we should be given the files and they should say to us that you have to appear in the court or you have to do some litigations? What is the right way for a freshie or the youngster who has just started the law practice? That's my question to the seniors. Thank you. Gee, thank you. Usman, do you want to take that? Sure, Bilkul. So Hashim, thank you very much. That's a good question and a problematic question for most fresh graduates. देखें, you would ideally want to be in court the first day after graduating because that's what you think or what most people think is the profession itself. मेरे ख्याल में there is no harm if you do not get as much opportunity over the first 3-6 months, as long as the research that you mention is focused research and research of a nature which really helps you develop on your profession. Court work देखें आएगा, so but I don't mean that this gets extended for 2 years or 3 years और आप कोर्ट ही ना जाए अगर आपका कोर्ट का दिल है, that's then way too long. But अगर शुरू का थोड़ा पीरियड है, आपको रिसर्च करनी पड़ रही है, आप करें वो रिसर्च, spend that time, and you'll find the success in that when one of those days you go to your senior, whoever you're working with, and you tell him कि सर मैंने ये पॉइंट निकाला और वो कहे वाह यार ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, and then you'll realize कि वाकई में मेरी रिसर्च का फायदा हो गया. So there's no harm in that. But yes, you're right, we are very lucky, Pansoda Saab as well, when he joined, that we got into a law firm which had a huge volume of work and a huge variety of work. So चाहे अगर मेरा दिल होता कि मैंने कोर्ट वर्क करना ही नहीं है तो मैं ना करता, that would have been managed also. हमारा बाकी ऑफिस का ट्रांजैक्शनल काम भी है, and vice versa also. So we are lucky that way, and you don't get those opportunities everywhere. आपको करना I think ये पड़ेगा कि you'll have to decide right up front कि आपका किस तरफ ज़्यादा मूड है. So for example, अगर आपकी inclination है towards and you've decided कि मैंने तो करना ही court work है, then for example someone like Pansoda Saab is not a bad option for you because as he said, they do tend to work more towards the litigation side. On the flip side, अगर आपका मूड है कि यार कोर्ट का तो मैं कोर्ट में देख भी नहीं सकता, उधर कौन गाड़ी लेके जाए इतने रश में, then you also have offices which do who are extremely transaction oriented. So that's the main bifurcation that you can find. Most of the firms will unfortunately hire you if you're connected somehow to someone that they know. That's one of the criteria and one of the things that people look in CVs most of the times. But I mean, again, if you work hard enough, we've seen this in our firm. If you're a good worker, if you're a good lawyer, if you're ready to put in the hard work, it doesn't matter where you're from, it doesn't matter what your background is, you will make a name for yourself and you will find your place in one of these law firms. Be it, for example, a firm like CLM, one of the growing firms like Pansoda Saab's, or be it any other law firm. हर जगह पे आपको opportunity मिलेगी. But you'll have to find that find the niche for yourself कि आपने start किस तरफ करना है, and then look for an appropriate setup. Great, Ji. Thank you so much for that, Usman, and thank you for that great question. Ahmed, आपके लिए अब सवाल है, anonymous सवाल है. How do you find a credible lawyer that has morals and will work for the client and not the fee? So if you want to take that. ये anonymous for a reason है. देखिए जी, सवाल बड़ा अच्छा important है, और on a serious note, lawyers and morals ये ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर मैं ऑफ लेट बहुत वोकल हो गया हूँ. मुझे मेरे दोस्त यार बहुत रोकते भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आई डोंट क्लेम टू बी द मोस्ट मॉरल पर्सन, बट येस, व्हेन माय इंटरैक्शन involves somebody else, a third person, then I have to bear the highest moral character which is prescribed under my profession. हाँ, मैं अकेला हूँ, एक लॉयर है, उसकी पर्सनल लाइफ क्या है क्या नहीं है, that does not impact anyone. But yes, अब मेरे पास एक बंदा है, उससे मैं पैसे पकड़ के तो अगले दिन कोर्ट में पेश ना हूं, ये बड़ी ज्यादती है. और ये हमारे बहुत सारे भाई करते हैं, अच्छे भी, पढ़े लिखे भी, हर तरह के. सवाल सिर्फ मेरा ये जो आप अपने भाई की है, देखिए आप उस वकील पे थोड़ी सी रिसर्च करें. आप देखें, मैं I have met a lot of clients who have done legal research on me as well, and at the same time Google research on me. हमने आपका फलाना केस पढ़ा है. Some of them even read my judgments.
and then they came up to me. So अब टेक का दौर है, टेक्नोलॉजिकल दौर है, आप उसके बारे में रिसर्च करें, उसके बारे में उसके दोस्तों से पूछें, कुछ वुकला से पूछें और फिर उसको हायर करें. बट कई दफा आपको बहुत जल्दी में हायर करना पड़ता है, तब भी एक नाम होता है, एक आवाज होती है और वो पता होता है. बट यस, बहुत सारे केसेस में मोरालिटी एंड लॉ जो है ना जी, वो जिस तरह हमारी जूरिस्प्रूडेंस में उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं मिलता था, इस तरह हमारे वकला में भी वो बड़ी एक दूसरे से नाराज रहते हैं. जी, अनफॉर्चुनेटली ये चीज अभी तक प्रेवलेंट है. किसी और के पास अगर सवाल है तो प्लीज यूज द रेज हैंड फीचर. आखिरी 5 मिनट अब रह गए हमारे पास. If not, we have one more question in the chat box. Extremely helpful, sir. Thank you for organizing. You're welcome. Pansota and Usman, would you like to recommend books for beginners for LLB? पहली तो बात ये जी, I think probably in my career the only book that I had read was The Godfather, and then I thought कि सच्ची किताब में लिखी जा सकती है ना होगी, तो इसलिए मैं तो बहुत किताबें पढ़ने वाला वकील नहीं था. एक बड़ा मिसनोमर है कि सिर्फ किताबें ही पढ़ेंगे तो वो वाला इम्पैक्ट आएगा. किताब पढ़ना बहुत अच्छी बात है. There is nothing that beats reading a good book, but now you have access to information through other means as well. I mean, I have read up a lot on how the mind works and how this meditation and all of that, but majority of my, I would say, research is YouTube based. And I've watched long videos that I've watched, and they've been very, very helpful. So yes, if you can read, good enough. If you can't read, then you can watch videos on that subject. So initially मैं जरूर कहूंगा 3 किताबें हमेशा हर बंदे को कहता हूँ, क्योंकि वो एक्सटर्नल प्रोग्राम में हमें नहीं पढ़ाई जाती, या ये जो वलैती कानून है इसमें हमें नहीं पढ़ाई जाती. पाकिस्तान पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और आईने पाकिस्तान, विच इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973. ये 3 किताबें तो आपके पास वैसे ही होनी चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन तो मेरे हर वक्त, मेरा जो दफ्तर का कोट है उसकी जेब में होती है, वैसे ही बैठे आप पढ़ रहे हैं. सो इट शुड बी योर बेड साइड रीडिंग, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव रनिंग दिस कंट्री. सो ये 3 किताबें तो मैं सजेस्ट करूंगा. चलिए, थैंक यू सो मच जी. डू वी हैव एनी मोर क्वेश्चंस? If not, thank you so much to both our speakers, Usman Sahi and Ahmed Pansota. Really appreciate your time. Thank you so much to audience members for asking your great questions. This session is recorded and will be uploaded on YouTube. We'll hopefully see you next week. Next week, हमारे आ रहे हैं COO of Multan Sultans from the Pakistan Super League, Haider Azhar.